Hello everyone, very good afternoon to all of you and welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. So my name is Samrat Keshari Mishra and you are most welcome to the channel. So today we will discuss some important concepts related to Indian polity and constitution. In my last session I discussed about fundamental rights पर discussion start करथिला हमें. Very good afternoon संतोष very good afternoon. Fundamental right ऊपर discussion हमें start करथिले last session ने. वर्तमान this is the second session हमें fundamental right को continue करियो from article 16. So ता पूर्वरो very small announcement कि in Unacademy recently we have started new batches for almost all the exams conducted by the government of Odisha. OPSC रो OCS Odisha Civil Service exam plus ASO Assistant Section Officer exam, Secretariat as well as High Court दुईटा exam ପାଇଁ batch course start हो सारिची. Monthon batch course start हो सारिची both for B.Ed and for B.Ed Science as well as Art stream. Samiksha batch course for OCS Prelims as well as Mains. In this I am going to take up Indian economy as well as social development issues. So use this referral code Samrat Live to get 10% discount upon your subscription amount. Avlokan batch course start is related to optional papers. OPSC preparation strategy upon mana dekhi paribe, which is available both in Unacademy app as well as in the Unacademy OPSC channel. Then there is a Prakash batch course. This is an ultimate test series program for assistant section officer examination. This is the difference between free and plus session. In free class you will be getting, there will be limited coverage of the syllabus along with limited practice test, limited PDF and note, whereas in plus you will be getting the entire syllabus to be covered, unlimited practice test sets, unlimited PDF and notes along with regular doubt clearing sessions by our top educators. संतोष पदार्थ प्री पाई इंपोर्टेंट. यस इट इज इंपोर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. प्रिलिमिनरी को आखिया कर रखी आपको मु शॉर्टकट रे जेमते प्री वे रे क्वेश्चन आसीबो ए हिसाब रे डिस्कस करूची. So subscribe to Unacademy Plus, use this referral code Samrat Live so that you will be getting 10% discount of your subscription amount. Now let's continue our discussion. We will move forward from Article 16. Article 15 पर्यंत हमें डिस्कस करथिले. Now we will discuss about Article 16, one of the most important article. So 16 पढ़ियो आगरो आउथरे I will remind you about Article 15. Article 15 prohibits discrimination. को जगह discrimination? It prohibits discrimination only on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth. It means the state can prohibit, the state can discriminate, but not only on this ground. Race basis रे, religion basis रे, caste basis रे state discrimination करी परिबो नाही, whereas on other basis the state can discriminate. First point. And second, ये in general discrimination को prohibit करथला Article 15, but Article 16 prohibit कौन करछि ना? Article 16 prohibit करछि discrimination in the from public employment. Equality of opportunity in the matter of public employment. It means no one shall be deprived of from public employment on any ground. कोनोसी ग्राउंड रे कोनोसी लोक को public employment रू deprivation करा जाई परिबो नाही. So Article 15 in general discrimination को prohibit करूची. Article 16 public employment रे discrimination को prohibit करूची. So Article 16 provides or guarantees equality of opportunities in the matter of public employment. Equal opportunity in the matter of public employment for everyone. So 16 clause 1 and 16 clause 2 lays down a general rule that there shall be equal opportunity for all the citizens. So emphasizes on the universality of Indian citizenship. So Indian citizens throughout India they are allowed. माने जो कहली मुंबई रे अलगा स्टेट रू जाइथवा लोक मानन को जदी चाकरी करिया को दिया न जाए. कभी महाराष्ट्र फॉर मराठीज. So in Maharashtra people coming from UP, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, they are not allowed to take up any job in Maharashtra. So that is a clear-cut violation of Article 16. ये जगह रे equal opportunities in the matter of public employment is considered to be violated. So no citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on the grounds of religion, race, caste, sex, descent or place of birth.
Then exception, there are certain exception to Article 16 as well. The first is the Article 16 clause 3. Article 16 clause 3 कहूची कि residence may be added as a qualification. Residence qualification may be made necessary in case of appointment under the state for particular position, because it will make the domicile provision very stronger. किछि provision अच्छी जो जगह रे we have to take the qualification of residence as mandatory. So that is not a violation. Then Article 16 clause 4, it empowers the state to make special provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen. Backward class citizen manakara appointment kariya pai, if their number is not adequately represented, then the state may make certain provisions for adequate representation of the backward classes, and it has been discussed under Article 16 clause 4, which is not a violation to Article 16. Then Article 16 clause 4a, ये कहूची reservation देला परे in the job, if SC and ST they are not adequately represented in the government service, at that point of time also there will be reservation in case of promotion. Promotion ने मध्य SC ST मान को reservation दिया जाएगा, and that will not be violation of Article 16. ये कहूची Article 16 clause 4. Then Article 16 clause 4b, it discusses about the carry forward rule. It was added through 81st Constitutional Amendment Act. Carry forward rule कौन कहूची कि the government through 81st Constitutional Amendment Act, government introduced or inserted a new article, Article 16 clause 4b. Article 16 clause 4b अनुसार जदि carry forward rule यूज होची and 50% reservation quota value breach है, then that will not be a violation of Article 16. Example हिसाब रे आपको बुझौची, let's say there are all total 200 posts, 200 post रू 100 रहिबो unreserved ପାଇଁ ଆଉ 100 रहिबो reserved ପାଇଁ. ये माने 2019 नो पोस्ट, 2019 ने जो 100 रिजर्व कैटेगरी अच्छी, लेट्स से कि ये 70 फिलअप हैला, 30 फिलअप हैला नहीं, देन 2020 रे जेतबे नेक्स्ट ईयर पोस्ट बाहर होची, पुणी धर 200 पोस्ट अच्छी, 200 रू 100 रहइबो रिजर्व, 100 रहइबो अनरिजर्व. ये रिजर्व कैटेगरी पूर्व 30 टा सीट वैकेंट थिला, ये जगह रे ये 30 टा सीट ऐड हेजिबो, दिस विल बी 130. 130 इज मोर देन 100. 50-50 रूल इट वायोलेट करिगला, 50-50 रूल वायोलेट करिगला, 130 मिललानी का रिजर्व कैटेगरी को. सो ये कहूची तेबे भी that will not be violation of Article 16. Carry forward rule ले Article 16 नो violation हबो नहीं. Next, Article 16 clause 5. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. ये जगह रे जदि कोनोसी religious institution ने कोनोसी प्रकार पोस्ट दवार अच्छी बा कोनोसी प्रकार अपॉइंटमेंट होची, रिक्रूटमेंट होची, at that point of time religion may be a sufficient qualification. माने ने गोटे जगन्नाथ मंदिर रो परिचालना कमिटी रो मुख्य अछि जणा एमती रिक्रूटमेंट होची तांको पय, तो से जगह रे जदि हम बाध्य करछन्ती कि नै मैंडेटरी दिस इज हिंदू रिलीजन लोक केवल दिया जिवो सिटी पोस्टिंग, ताहले ठीक अछि, दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16. बा कोनोसी प्रकार मस्जिद अछि, मस्जिद रो मैनेजमेंट बा अफेयर्स रे जदि कोनोसी मुस्लिम को रखा जाउची, देन दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16. देन आर्टिकल 16 क्लॉज 6, it is added to provide reservation to economically weaker section of the society. Economically weaker section किए, and they are the unreserved category people, जो माने reserved category आसुंतिनी, एमानंकर किछि क्राइटेरिया अछि फुलफिल करबा दरकार, जेमति कि annual income should be less than 8 lakhs, then 1000 square feet रो अधिक रे घर नथिबा दरकार, district average land holding ठू कम लैंड थिबा दरकार, नियरेस्ट सिटी रे मानकर लैंड नथिबा दरकार. तो EWS मानको रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स only in central government jobs, not in the state government jobs. Now reservation in the promotion for SC and ST. Central government demanded for a review of 2018 Supreme Court verdict Jarnail Singh versus Lakshmi Gupta case. एथिरे SC ST मानको प्रमोशन ने रिजर्वेशन दिया जाय बोली verdict आसिला, then central government demand कला एको रिव्यू करिया पई. So finally Supreme Court uphold कले
Karnataka extension of consequential seniority to government servants promoted on the basis of Preservation Act 2018. ये एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कले कि प्रमोशन रे कोटा प्रोवाइड करिवा दैट इज नॉट वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 16 बिकॉज 2006 रे यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहूची इन 2006 देयर वाज अ केस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये जगह सुप्रीम कोर्ट कहले कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ SC and ST in the promotion is valid with three conditions. First, quantifiable data on the backwardness of the scheduled caste and scheduled tribe. Quantifiable data रहिबा दरकार. Second, the factors about their inadequate representation अर्थात सेमानकर inadequately they are represented in the government service ये भी प्रूव हो दरकार. Plus the overall administrative efficiency that should not be affected. The overall administrative efficiency that should not be affected. ये जगह रे कोटा बा रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाय पारिबो. Then the center approached Supreme Court that the verdict in the M Nagraj case put unnecessary condition in granting quota benefit. That is why in the Jarnil Singh versus Lakshmi Gupta case 2018, Supreme Court allowed for grant of quota for the promotion in the government jobs to SC and ST without the need to collect quantifiable data. The court also asked the government to examine the possibility of introducing creamy layer for scheduled caste and scheduled tribes. So these are important articles we have discussed. Now let's discuss about Article 17 and Article 18. Article 17 it discusses about abolition of untouchability. So now the question is, what is untouchability? Untouchability has been mentioned nowhere in the constitution. First point one rakhibe. Then in 1976 Untouchability Offences Act asila. Untouchability Offences Act asila. In general practice अनुसार हम जब देखिबा untouchability it is practiced in the Hindu religion and a person is looked down only on the basis of his or her birth. So untouchability को diminish करिया पई, deprive करिया पई, eliminate करिया पई in any form the constitution discusses under Article 17. So this is about abolition of the untouchability under Article 17. Now Article 18 abolition of the titles. टाइटल कौन जो इंग्रेज माने थिले ब्रिटिशर माने थिले सेतबेले से माने टाइटल दोले लाइक राजाधिराज महाराज चौधरी. सो ये सब टाइटल को अबोलिश करिया पई कहूची. सो द स्टेट इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइप ऑफ टाइटल. बट एटी गोटे एक्सेप्शन अछि. द एक्सेप्शन इज द मिलिटरी एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन. एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्थात जने PhD करके ना आगु डॉक्टर लागि छै, दैट इज अलाउड, दैट इज नॉट वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 18. मिलिटरी डिस्टिंक्शन परमवीर चक्र बा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण ये सब तो 1996 रे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कले कि भारत रत्न अवार्ड्स बा पद्मा अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्मभूषण ये सब को यूज करिया ना पूर्व दैट इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल. दे आर नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So this is about Article 18. Now let's discuss about one of the most important article, that is Article 19 of the Indian Constitution, protection of certain rights regarding the freedom of speech. So first is the right to freedom of speech and expression. Right to freedom of speech and expression. Now the question is, why to provide freedom of speech? Freedom of speech को provide करिवार कारण कौन? The first is for active participation in the democracy. डेमोक्रेसी रे एक्टिव पार्टिसिपेशन काहे की दरकार? बिकॉज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल एंड डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल. सो इन जनरल डेमोक्रेसी और द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी at that revolves around the people. It revolves around the people. Active participation of the people is a must. Then for the discovery of truth by open discussion. For the discovery of truth by open discussion, freedom of speech and expression is required. For expressing belief and political attitude, freedom of speech and expression is required. For speech as an, because speech as an aspect of self-fulfillment or development, that is why freedom of speech and expression is required. So these are the reasons for which we need Article 19 of the Indian Constitution. Article 19 कौन कौन कहूची? Now first one is the freedom of speech and expression. It is included under 19(1)(a). It also includes freedom of press, freedom of information, freedom of silence, freedom against bandh, right to telecast and right to advertise.
ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? एक्सप्रेसिंग वन्स ओन व्यूज plus expressing others views, that is known as freedom of speech and expression. मु मोर व्यू को एक्सप्रेस कर परिबी, simultaneously I can express views of others. जहां ऊपर बेस करी फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कौन सी जगह रे डिस्कशन करा जाय नाही, रादर फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अनुसार फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक अछि. मनोज सेज राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 हमें डिस्कस करबा, गोटे गोटे सब आर्टिकल को हमें डिस्कस करिया वर्तमान. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस मन रखु ये इंपोर्टेंट. फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लिखा जाय नथिला, डिस्कस हेइ नथिला, रादर फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a). इट वाज इंक्लूडेड विथ द वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. देन मोस्ट इंपोर्टेंट इज द फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइज. एडवर्टाइजमेंट ये गोटे फंडामेंटल राइट्स. कहीं के एडवर्टाइजमेंट को रखा जायछि ना राइट टू नो of the about the government activities, that is a fundamental right under article 19(1)(a). बर्तमान एठी बुझंतु जदि right to know is important, then automatically freedom of press is also important. ये दीटा राइट्स को कंबाइन करंतु, फ्रीडम ऑफ प्रेस प्लस राइट टू नो, फ्रीडम ऑफ प्रेस प्लस राइट टू नो, ऑल दीज आर इंपोर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सिटीजन. कहीं by याकु गोटे लोक राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज केमि जानि परबो? थ्रू द जर्नल्स, थ्रू द न्यूज़पेपर थ्रू हमें जानि परबा. न्यूज़पेपर जो एडवर्टाइजमेंट आसुची, दोस एडवर्टाइजमेंट ये जदी से एडवर्टाइजमेंट न आसे, देन द कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर विल बी हाई. 50 रुपीस 60 रुपीस कॉस्ट आसीबो पर डे, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पीपल, इट विल बी रियली टफ फॉर द पीपल टू परचेस न्यूज़पेपर विथ अ प्राइस ऑफ 60 to 70 रुपीस पर डे. सो आमे जेमति 5 टंका 10 टंका रे न्यूज़पेपर पाउछन, मैक्सिमम हिंदू न्यूज़पेपर में 10 टंका रे पाउछन. जदी न्यूज़पेपर रे एडवर्टाइजमेंट न दिया जाए, देन ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर रो प्राइस बढ़ जिवो, कॉस्ट बढ़ जिवो ऑन डेली बेसिस, एंड पीपल विल नॉट be able to afford the price of the newspaper, and hence the freedom of the press including freedom of the right to know will be violated. So automatically freedom of press as well as freedom of right to know about the government activities, that will be violated. ये तीटा कारण पई right to advertisement is included under freedom of speech and expression. बुझी पारले काहे कि एडवर्टाइजमेंट को रखा जाय छी फ्रीडम ऑफ 19 अंडर रे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर रे. देन the way in which we can express ourselves, आमे किछि कहि कि निजो को एक्सप्रेस करि परिबा, इन द सेम वे आमे साइलेंट रहि कि निजो को एक्सप्रेस करि परिबा, ताकू फ्रीडम ऑफ साइलेंस बोली कहै जाय, एंड दैट इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नाउ एठी किछि कंडीशन अछि, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आमे को एक्सटेंड पर्यंत यूज करि परिबा. तो आमे कहले कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अछि, प्रेस पाखरे ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश करिवार अधिकार दिया जाय छी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करी प्रेस कहा को क्रिटिसाइज कर परिबोनी, कहा को इंसल्ट कर परिबोनी, बा आउ कहा फंडामेंटल राइट्स जेमति वायलेट न होय, जेमति राइट टू लाइफ एज वेल एज डिग्निफाइड लाइफ, ये जेमति वायलेट न होय. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नो मिस यूटिलाइजेशन बा माल यूटिलाइजेशन हे परिबो नाही. द नेक्स्ट इंपोर्टेंट वन इज द फ्रीडम ऑफ असेंबली. देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन कौन अछि ना सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कले जदि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी नष्ट होछि ताले हम यूज करि परिबानी. सिक्योरिटी को जदि थ्रेट अछि ताले यूज करि परिबानी. जदि फॉरेन स्टेट मानक सहित फ्रेंडली रिलेशन हैम्पर होछि ताले यूज करि परिबानी. जदि पब्लिक ऑर्डर वायोलेट होछि ताले यूज करि परिबानी. जदि डिसेंसी एंड मोरालिटी वायोलेट होछि ताले यूज करि परिबानी. जदि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होछि ताले यूज करि परिबानी. कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दी प्रकार, सिविल कंटेम्प्ट प्लस क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट कोन जदि कोर्ट गोटे डेट दैछन्ती हमकु कि 25 तारिख दिन ये लोक को समन करा जायछि आसे देखा करिया पई, से जानि सुनी कोर्ट रो निर्देश को माननी अपमान करूछि. सो दैट इज सिविल कंटेम्प्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करी कोर्ट को क्रिटिसाइज करबा, कोर्ट रो ऑर्डर को क्रिटिसाइज करबा, जज को क्रिटिसाइज करबा, ये सब होछि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. सो आमे एमति किछि कहि परिबानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करी जहा द्वारा देयर विल बी अ कंटेम्प्ट टू द कोर्ट. देन इनसाइटमेंट टू ऑफेंस. इनसाइटमेंट टू ऑफेंस कोन आमे किछि सेडिशियस स्पीच दबा. सेडिशियस स्पीच देला परे कम्युनल राइट्स हो, दीटा गोष्ठी भितर दंगा हो, गोष्ठी कंदल सृष्टि हो, तो ये जगह रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि परिबो. सो एठी बुझंतु कि आर्टिकल 19 इज नेवर एब्सोल्यूट, रादर आर्टिकल 19 इज क्वालिफाइड बिकॉज़ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड अपॉन आर्टिकल 19 ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि परुछि, जेमति कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency, morality, contempt of court,
incitement to offense, all these are reasonable restrictions which can be imposed upon Article 19 of the Indian Constitution. That is why Article 19 is never qualified, is never absolute, rather it is a qualified right. बुझी पारले समस्त? Is it clear about freedom of speech and expression? Freedom of speech and expression यहाँ पर आहुरी अनेक डिस्कशन करियो मेंस एंगल लो, बट जेहेतु टाइम कम अछि हम पाखरे, प्रीलिम्स एग्जाम अछि आगो को, हम केवल प्रीलिम्स एंगल डिस्कशन करिया. बुझी परछन समस्त जते जन जॉइन करछन बर्तमान आगो को जिबा. Article 19(1)(a) right to information ऊपर सुनिथिबे. Right to Information Act, it was passed in 2005. It is also included under Article 19. So 19(1)(a) includes right to information. Then State of UP versus Raj Narayan case 1975. In this case it was observed that the right to know is derived from the concept of freedom of speech. Right to know about the government activities, it has been derived from the freedom of speech. Then SP Gupta versus Union of India case 1981. In that case the concept of open government, it was declared by the Supreme Court. So Parliament enacted Right to Information Act in 2005 to implement open government. Open government मान है transparent government. Now let's talk about the important concept sedition. Sedition कोठी include है. Sedition ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए नहीं, rather IPC इंडियन पेनल कोड आर्टिकल सेक्शन 124A रे डिस्कस होइछि. सो वर्तमान रिसेंट अरेस्ट देखिथिबे बेंगालुरु कश्मीर on the ground of protesting against the Citizenship Amendment Act, in raising the pro-Pakistan slogans. So it created a heated debate around India's sedition law. JNU रे केस सुनिथिबे बा anti-Indian sentiments, anti-Indian slogans like भारत तेरे होंगे 100 टुकड़े, भारत की बर्बादी हमारी आजादी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है. So this type of seditious activities, this type of seditious slogans or anti-Indian slogans, they come under the concept of sedition. Sedition history जदि हमें देखिबा section 124A Indian Penal Code रे ये अछि, it has been mentioned. It was drafted by Thomas Babington Macaulay and included in the IPC in the year 1870. यहाँ पे punishment non-bailable offence. Non-bailable offence, Indian freedom struggle जदि हमें देखिबा, then the person who is charged under the sedition law, he cannot apply for a government job. So the student थिबो, then the student will be not allowed to continue classes in the school or university. So जदि Indian political history देखिबा, then many famous personalities like Jogendra Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, even if Mahatma Gandhi, they were imprisoned by using the sedition law. So recent case study केतरा देछि एठी मने रखिबे, रमेश थापर केस, केदारनाथ सिंह केस, कन्हैया कुमार केस, ये सब sedition law related. एथरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसी पारे, which of the following are related to sedition? Most important. Now what is the exact meaning of sedition? Sedition कहले हमें कोन बुझंती? Sedition means to disrupt the public order, to disrupt the public law and order. Sedition means an attempt to violate the overthrow of lawful government. Lawful government means which is elected by the government. Sorry, which is elected by the people. So the government which is elected by the people, if we will attempt to violently overthrow the lawful government, that will come under the concept of sedition. In the same way, threatening the security of the state or of the public, that also comes under sedition. Then Article 19(1) Clause B. Article 19(1) Clause B. This is all about Article 19(1)(a). Now let's discuss about Article 19(1)(b). 1B discusses about right to assemble peacefully and without arms. A right to assemble peacefully and without arms. So every citizen of India, we have right to assemble peacefully without having any arms. We can have public meetings. जहाँ public meeting देखुचंती, public meeting ही परिवार, demonstration ही परिवार रास्ता रे, procession ही परिवार रास्ता रे, because all these are assemble peacefully without using any arms and ammunitions. So यार किसी condition अच्छी Article 19(1)(b) रो. The first is the assembly must be peaceful as well as that must be harmonious. ये assembly peaceful हवा दरकार plus harmonious हवा दरकार. That must be unarmed. कौन से लोग arm and ammunitions व्यवहार करी पारिबे नहीं. That should not threaten the public safety. Plus reasonable restriction यहाँ पर निश्चित भाव लागी पारिबो. जदि मानिने वर्तमान आमे कहे कि peacefully assemble हेचंती during the period of lockdown and shutdown. Lockdown shutdown अनुसार
आम आसेम्बल हो पारे गोटे जगह किंतु आम कह कि बिना आर्म्स एंड एम्युनिशन आसेम्बल हो पीसफुली आसेम्बल हो बाहागर भोजी आसेम्बल हो तमाने ये रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी पार आर्टिकल 19(1)(b ऊपर सो 19(1)(b इज नॉट एब्सोल्यूट रादर इट इज क्वालिफाइड सो या बुझापी हमको दुईटा सेक्शन गोटे आईपीसी गोटे सेक्शन सीआरपीसी गोटे सेक्शन बुझा पड़ो आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रो सेक्शन 144 एंड आईपीसी सेक्शन 141 सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी ये कहूची कि 5 बा 5 रु अधिक लोकंगर असेंबली को अनलॉफुल बोली डिक्लेयर करा जाय पाइबो को जगह डिक्लेयर करा जिवो फर्स्ट जदी से कोनोसी लीगल प्रोसेस को कोनोसी लीगल प्रोसेस चलछि से ताको ऑब्स्ट्रक्ट करचंती लीगल प्रोसेस माने धर तहसीलदार तांगर किछि काम करचंती कलेक्टर किछि काम करचंती 5 बा 5 रु अधिक लोक जदी लीगल प्रोसेस को अटकाउचंती बा जदी कोनोसी लोकर प्रॉपर्टी को जबरदस्ती तोर प्रॉपर्टी को नवा पई आछचंती से जगह रे जदि क्रिमिनल ट्रेसपास अर्थात तुम घर भीतर जदि के जबरदस्ती पशुची 5 बा 5 रु अधिक लोक ताहले से असेंबली को अनलॉफुल बोली डिक्लेयर करा जिवो ताहले से असेंबली को अनलॉफुल बोली डिक्लेयर करा जिवो जदि से माने कोन इलीगल एक्ट करचंती जसे असेंबली कोन जगह बम पकेया पे प्लानिंग करूची प्रोस्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर ये सब को प्रमोट करिया पे किछि काम करूची ताहले से असेंबली को अनलॉफुल बोली डिक्लेयर करा जिवो बा जदि गवर्नमेंट ऑफिशियल जदि किछि लॉफुल पावर पर्पस रे यूज करचंती लॉफुल काम करचंती तांको जदि अटकिया चेष्टा करची ताहले से असेंबली को मध्ये अनलॉफुल बोली डिक्लेयर करा जिवो ये कोड डिस्कस हेची ना सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड In the same way, you have to understand section 144 of the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code 1973 अनुसार मैजिस्ट्रेट कौन सी असेंबली मीटिंग बा प्रोसेसन को बंद करि परिबे को जगह बंद करि परिबे ना इफ देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ अनोयंस देयर इज अ डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ यदि ह्यूमन लाइफ को डेंजर अछि इफ देयर इज अ थ्रेट टू द हेल्थ सेफ्टी वर्तमान देखंतु किछि जगह धारा 144 कर्फ्यू रो ना सुनिथिबे कर्फ्यू जारी हेछि धारा 144 जारी हेछि सो धारा 144 कहार जारी हेछि कॉन्स्टिट्यूशन नुहे आईपीसी रो नुहे रादर दैट इज सीआरपीसी रो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रो 144 धारा जारी होवार अर्थ होछि कि मैजिस्ट्रेट रिस्ट्रेन करचंती 5 बा 5 रु अधिक लोक मानकर असेंबली को ग्राउंड रे ना पब्लिक हेल्थ ग्राउंड रे ही पारे सेफ्टी ग्राउंड रे ही पारे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ग्राउंड रे ही पारे राइट होबार आशंका थिले ही पारे बा इफ देयर इज अ डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ से जगह मध्ये ही पारे 19(1)(b freedom of this is freedom of assembly so freedom of assembly you have freedom of assembly but we don't have freedom of or the freedom of assembly is never absolute rather it is qualified जदि freedom of assembly को हम absolute नहीं जबा ताहले लॉकडाउन शटडाउन पीरियड रे बा सोशल डिस्टेंसिंग लोक मेंटेन करबेनी 10 टा लोक गोटे जगह गदा हेबे बाहागर भोजी अटेंड करबे ए जगह हम किछि लॉ काम करबोनी बिकॉज़ दैट विल बी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ए तो वर्तमान एठी स्टेट बा पुलिस एमान को एक्शन लेबा चाहिले द पर्सन विल डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 32 कि माय फंडामेंटल राइट हैज बीन वायोलेटेड or the person will approach the high court by using article 226 of the Indian constitution कि my fundamental right has been violated so article 19(1)(b is never absolute rather that is qualified it means reasonable restriction can be imposed upon article 19 of the Indian constitution the next and the most important article that is right to form association or union or cooperative societies एसोसिएशन फॉर्मेशन करबा यूनियन फॉर्मेशन करबा ये अधिकार हमको दिया जायछि एंड दैट टू ये हमर मौलिक अधिकार ये हमर फंडामेंटल राइट्स एई आर्टिकल 19(1)(c या बलरे पॉलिटिकल पार्टी क्लब सोसाइटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड यूनियन ये जत्ते प्रकार यूनियन देखुचंती जत्ते प्रकार एसोसिएशन देखुचंती ये सब आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी रु ही डिराइव करचन समान अथॉरिटी सो पॉलिटिकल पार्टी बीजेडी बीजेपी ये गोटे एसोसिएशन ऑफ सेम माइंडेड पीपल तो they derive their authority from the right to form association या सहित आउ गोटे जिन मन रखिबे कि right to form association doesn't mean right to be recognized गवर्नमेंट recognition करि पारे न भी करि पारे हमें गोटे पार्टी फॉर्मेशन करि देले it doesn't mean कि गवर्नमेंट is bound to recognize our party government may recognize government may not recognize next is the right to move freely throughout the territory of India. Whenever you discuss about movement, there are two concepts associated: inside India and outside India. Inside India means मुकैली मु भुवनेश्वर कटक जीवी, भुवनेश्वर दिल्ली जीवी, भुवनेश्वर बॉम्बे जीवी, भुवनेश्वर दार्जिलिंग जीवी, भुवनेश्वर गैंगटक जीवी. So that is movement inside India. मूवमेंट आउटसाइड इंडिया माने मु भुवनेश्वर रु जने लंडन जाउची जने यूएसए जाउची जने ऑस्ट्रेलिया जाउची सो मूवमेंट इनसाइड इंडिया ये हमारा फंडामेंटल राइट बाय यूजिंग आर्टिकल 19 मूवमेंट आउटसाइड इंडिया ये हमारा फंडामेंटल राइट बाय यूजिंग आर्टिकल 21 दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21 सो 19 इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनसाइड इंडिया
but there are certain definitely there are certain reasonable restrictions. For the protection of the scheduled tribe we cannot move, for the interest of the general public we cannot move. Then article 1 clause, article 19 1e, article 1e that is complementary to 1d. 1d कहूँ राइट टू मूवमेंट, आम भारत भीतर कौन जगह मूवमेंट कर खाली तो मूवमेंट कले हेनी, साइमल्टेनियसली आम से जगह रिजाइड कर सेटल हो पार जगह कि घर कर रही पार. सो 19(1)(e कहूँ कि राइट टू रिजाइड एंड टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. देन आर्टिकल 19 नेक्स्ट क्लॉज 1f, right to practice any profession or to carry out any occupation. You have the authority to carry out any occupation. आमे कौन सी प्रकार occupation करी परिबा, कौन सी प्रकार occupation को practice करी परिबा. But it doesn't mean कि के कहबो मते भल लागुची I love surgery so that I will start all of a sudden I will start doing neurosurgery. मते brain surgery करिया को भल लागुची, मते heart surgery करिया को भल लागुची, so म cardiologist हे जिबि आछि. But certain qualification you should possess. किछि काम पई certain qualification we should possess to do particular type of activity. Otherwise in general activity kariya pai you are completely allowed. So this is all about article 19 of the Indian Constitution. I hope it is clear to everyone. If you have any doubt then let me know through the comment section. In the comment box type your doubts, I will definitely try to clarify it. Now the most important article let's discuss about is article 20. Article 20, protection in respect of the conviction for offences. सो याको बुझिया पहिला हम तीनटा कथा बुझिया पय पड़िबो इंपोर्टेंट. प्रथम होला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, द्वितीय होला नो डबल जेओपार्डी, तृतीय होला नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन अर्थ कोन? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन अर्थ कोन? ये कहू जे जदि कोनस लोक जण चोरी करिछि बा जण मर्डर करिछि से जगह रे ताको सेति की पनिशमेंट दिया जिवो जेति की लॉ रे मेंशन हैछि, ताटो अधिक आमे ताको देई परिबा नाही. सो जण चोरी करिछि से जगह रे तार लॉ अनुसार हम देखले ताको 2 वर्ष जेल दिया जिवा दरकार, तो ताको हम 4 वर्ष सेठी जेल देई परिबानी. तो लॉ अनुसार ही पनिशमेंट प्रोवाइड करा देई पारिबो. देन नो डबल जेओपार्डी रो अर्थ होछि माने गोटे लोक चोरी करिकि 2 वर्ष जेल गला, से 2 वर्ष जेल आसला पर हमें कहले आउथरे कि नै से तो चोरी करतला 2 वर्ष तळे ताको आउथरे आउ 2 वर्ष जेल पठाओ. सो गोटिए ऑफेंस पई 2 थर पनिशमेंट दिया जाई परिबो नाही, गोटिए ऑफेंस पई केवल गोटिए थर ही पनिशमेंट दिया जाई परिबो. थर्ड इज नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन. नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो अर्थ हैला निज विरुद्ध रे निज को साक्षी देबा पई हमें काको बाध्य करि परिबा नाही. दैट इज कॉल्ड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन. Now I would important concept कहबी e related, no double jeopardy related. Double jeopardy in general it is of two types, autrefois acute and autrefois convict. Autrefois acute रो अर्थ होची योर फ्रेंच टर्म जहार अर्थ होची प्रीवियसली acquitted. acquitted माने हला not convicted. acquitted रो सॉरी acquitted रो माने हला not guilty, निर्दोष. convicted रो माने हला दोषी साब्यस्त होईची से लोक पूर्वरो. सो autrefois acute प्रीवियसली not guilty, autrefois convict अर्थात प्रीवियसली गिल्टी. गोटे केस चलीची, केस चलीला परे हम फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट पहुंचले कि से लोक दोष करिछि. सो दैट विल बी autrefois acute. जदि से लोक दोष करि नाही देन दैट विल बी autrefois convict. ये कहूची इंडिया रे जदि हम देखिबा यूएसए रे दिटा तक फंडामेंटल राइट, autrefois acute बी convict. इंडिया रे autrefois acute इज अ लीगल राइट बट autrefois convict that is a fundamental right. autrefois convict माने गोटे केस हमनार चलीची जने 5 वर्ष जेल गला से आसिला पर हम आउ थरे ताकू जेल पठै परिबानी, किंतु जनकनार गोटे केस चलीची जदि से लोक autrefois acute हे गला, acquittal हे गला, निर्दोष बोली प्रमाणित हो गला, किंतु पुणी किछ दिन पर तानार केस होची से देखा जाउची कि से केस रे से लोक इन्वॉल्व होची, देन दैट विल नॉट बी अ फंडामेंटल राइट. ये कथा है इंपोर्टेंट मन रखो. दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 20. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो आर्टिकल 21 it declares no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Article 21 is available both to Indian citizens as well as to the non-citizens. यहाँ पर डिस्कस कला बेले सब मन रखिए मु पूर्व कही आर्टिकल 15, 16, 19, 21, आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये पांचटा आर्टिकल these are available only to citizens. Other articles they are available both to citizens as well as non-citizens. So article 21 is available to both citizens as well as non-citizens.
आर्टिकल 21 दीटा कथा कहूची प्रथम है राइट टू लाइफ द्वितीय है राइट टू पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ देखो लाइफ विदाउट डिग्निटी लाइफ विदाउट लिबर्टी देयर इज नो वैल्यू ऑफ लाइफ आम जन को जबरदस्ती घर रखा काम करवा टंका दबानी जन पाखे लिबर्टी नहीं से मन इच्छा बोली पार मन इच्छा से कविता लिखि पार मन इच्छा से पाठ पढ़ी पार मन इच्छा से सोसाइटी रही पार सो दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस अपन द लिबर्टी ये सब किंग टाइम पीरियड नथला बिकॉज किंग वाज द लॉ बट नाउ लॉ इज द किंग so we can confer liberty is all about providing freedom to the citizens so in today's time period in the modern time period almost all the democratic countries their basic objective is to provide liberty to the people is to provide liberty and freedom to the people to their respective citizens so it is being discussed under article 21 is the most amended section of the fundamental right as well as it is it includes many things like right to live with human dignity right to life खाली नुहे कि जन पाखरे लाइफ रहबा rather human dignity को रहबा दरकार हम पाखरे right to have a dignified life right to have a decent environment including pollution free water air and protection against hazardous industries ये भी हमारा fundamental right to livelihood right to privacy right to shelter right to health right to sleep right to love marriage right to speedy trial right against handcuffing right against inhuman treatment right against delayed execution right to travel abroad ये सब article 21 रे आसुची so article 21 ର meaning जदि हम देखिबा it is a very broad article which includes almost all the sections of or almost all the aspect of human life it includes right against custodial harassment शुणी या बहुत गुड़े केस बर्तमान पुलिस अरेस्ट कला जो हरास करुच्ची बाड़े बाड़े की मारी दउची कस्टोडियल हरासमेंट कस्टोडियल रेप ये सब these are violation to the article 21 of the Indian constitution then right to provide emergency medical aid whenever it is required medical help should be provided during emergency time period so all these are included in article 21 then there is another important point in it that is right to free legal aid right to free legal aid रे कोन हुए जदि गोटे गरीब लोक अछि से तार legal aid नहीं पारने तो से जगह रे गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडवोकेट फॉर दैट पर्सन देन कॉपीज ऑफ ऑल द वर्डिक्ट कोर्ट वर्डिक्ट रो कॉपी ताको मागणा रे मिलिबो से लोकर घर को पठा जिवो तो याको लीगल एड कहंती बा देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्सेस टू जस्टिस मन रखंतु याको टर्म देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्सेस टू जस्टिस इज ensured through right to free legal aid to all the citizens of India that is a fundamental right then right to timely medical treatment in government hospital le timely treatment मिलवा दरकार जदि timely treatment न मिले then that will come under the negligence of the doctor negligence of the public servant and the public servant or the doctor will be punished as per the provisions of Indian Penal Code IPC अनुसार then right not to be driven out of the state रू बा country रू हमके बाहर करि परिबेनी fair trial free and fair trial राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग गोटे लोक जब भूल कर फांसी दि जाऊँगी एमती ना कि आम रास्ता ऊपर फांसी देदेवा राइट टू हियरिंग कौन लोक को बिना हियरिंग रे कौन लोकर एग्जीक्यूशन कर जेल पठा जाई परिबनी राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू रेप्यूटेशन ये सब आर्टिकल 21 अंडर आसुची सो आर्टिकल 21 इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ये लाइफ रो पाखापाखि सब एस्पेक्ट को आर्टिकल 21 कवर करछ I hope it is clear बुझी पारछन समस्ते many of the candidates join right now बुझी पारछन फंडामेंटल राइट ऊपर क्लैरिफिकेशन आसुची समस्त को क्लैरिटी आसुची जदि डाउट रहउची ताले कमेंट सेक्शन में लिखिबे डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स ये आर्टिकल मान को ऊपर पूर्वरु एक्सटेंसिवली मु डिस्कस करछि अनअकैडमी ओपीएससी YouTube चैनल ले अनअकैडमी स्पेशल क्लास थ्रू रे मध्ये आपण देखि पारबे दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यू कैन was there all the videos are available apart from that Unacademy रो plus subscription नेला परे आपण मोर प्रत्येक क्लास इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट रो क्लास ज्योग्राफी रो क्लास करि परिबे which has been designed specially for OCS exam Odisha Civil Service Examination 2020 by you can use the referral code Samrat Live SAMRAT Samrat Live so that you will be getting 10% off upon your subscription amount else you can also use the referral code EGOS to get 10% discount on your subscription amount so ये सब टॉपिक मु कवर करिछि अपन देखि परबे Unacademy
OPSC channel. Now let's discuss about another important article, Article 21A of the Indian Constitution. So it declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 6 to 14. 6 ରୁ 14 वर्ष भितर समस्तंकु compulsory education provide करा जवा दरकार. In such a manner as the state may determine, added by the, it was added through 86th Constitutional Amendment Act. Most important, ये को type of question आसी परिवो ना 6 to 14 years को article अच्छी, that is Article 21A, first point. Second, को Constitutional Amendment Act अनुसार ये add इतला, that is through 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Why? कौन पे ये add है ना, to achieve education for all. कौन पे add है ना, to achieve education for all. So Article 21A add होगा पूर्वरु ये provision exist करूतिला. It was there in the Article 45 Part 4. Part 4 हेले आपनकर DPSP under रे ये थिला. But DPSP under रे थिबा द्वारा ये enforceable हेई पारेनी, because DPSPs are not enforceable. Rather fundamental rights, they are enforceable in the court. Court रे fundamental rights are enforceable. For the violation of fundamental right, we can approach the Supreme Court, we can approach the High Court by using Article 32 and by using Article 226 respectively. But for the violation of DPSP, we can approach the court. So for that purpose, it has been inserted to the fundamental right through 86th Constitutional Amendment Act. So there is a scope of judicial intervention. जदि प्रत्येक पिला को जो मानकर बयस 6 ରୁ 14 वर्ष से माननको फ्री एजुकेशन मिलु नाही, RT राइट टू एजुकेशन मिलु नाही, ताले ये जगह रे कोर्ट इंटरफेयर करि परिबे, जुडिशियरिटी इंटरफेयर करि परिबे. So this is all about Article 21 of the Indian Constitution. आज हम important provision discussion कले Article 16, 17, 18, 19, 20, 21. So ये सब आर्टिकल को पढ़िबे ठीक भाव रे गोटे थोर बुझिबे. You can go through the Lakshmikant book. If you have any doubt, then let me know, I will clarify. Next session ने कोन डिस्कस करिबी आर्टिकल 22 onwards डिस्कस करबा. ये केवल प्रीलिम्स एंगल रे रहउची. या पूर्वरु या परे हमें मेंस एंगल रे भी डिस्कस करबा. बट जेहेतु वर्तमान प्रीलिम्स एग्जाम अछि, हमें केवल ऊपर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे पढ़िबा, मेंस पर्सपेक्टिव रे आउथरा में डिस्कस करबा. So remember this special code, remember this referral code Samrat Live, SAMRAT LIV, or EGOS EASYOS, so that you will be getting 10% discount while taking plus subscription, or it will also be useful for to open the free content. To unlock the free content, a code is required. You can put this code Samrat Live or EGOS, so that you can access to the free content given by Unacademy. In the next session, I will discuss rest of the syllabus from Indian Polity and Constitution. So up to then, stay positive and continue your preparation. See you in the next class. Have a good day. Thank you everyone.